Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 Slot 1 VA questions, verbal ability, summary questions and parajumbles. Now, please don't complain. I am way too lazy, way too lazy to solve odd one out questions. I absolutely do not like them at all. So that is why I'm taking the liberty to not do those questions in this video. I won't be doing them at all actually. And summary parajumble questions are actually done here. RC passage is already done and uploaded in suitable playlist. I would strongly recommend that you solve those if you haven't already. And now without any delay, let's go solve some summary questions and then some parajumbles. ठीक है? So as usual, I would recommend कि आप हर time stamp का use कीजिए, which I have put in. There are 3 summary questions and 3 parajumble ones which came in the exam. Jot down your answers and then also check out the explanation as you wish. Either you move with me serially one question at a time or you solve all those using the timestamps and then check for the relevant answers. As is your wish. Chalo then, without any delay, let's try and solve this first summary question. क्या कहता है यहाँ पे? Very straightforward. You have two guys by the name of McGurk and McDonald. इन्होंने 1976 में एक कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया weird सा. What they did is they took an audio clip जिसके अंदर आवाज कोई तो इंसान शायद ब बोल रहा है या बा I don't know, but it's this sound ब. Then they have a video, rather video नहीं बोल सकते, वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों आ जाता है. एक विजुअल है, एक रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, जिसके अंदर देयर इज सम पर्सन इन दैट वीडियो एंड दैट पर्सन इज प्रोनाउंसिंग ग और गा व्हाटएवर. ठीक है, बट उसका ऑडियो जो है ग ये जो साउंड है ये निकाल दिया. व्हाट दिस टू गाइस डिड इज दे कंबाइंड दिस ब वाला वॉइस क्लिप, ब वाला साउंड and ग वाला वीडियो and they played it together in front of let us say some person X. ठीक है, और उस X पर्सन को पूछा कि भाई तुझे क्या सुना आ रहा है. तो इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड इज कि दिमाग में वायरिंग का थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन हो गया. दैट गाय सेड कि यार मुझे तो ड सुना आ रहा है, व्हिच इज अ लिटिल बिट वियर्ड. ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट हो गया ये जो भी इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज दैट पर्सन इज सीइंग समथिंग एल्स बट ही इज हियरिंग समथिंग एल्स. तो सॉर्ट ऑफ ऐसा सिचुएशन हुआ है that the brain has now ended up fusing these two things in a unpredictable fashion, so that the end result is that the person ends up hearing something like this. तो इस इफेक्ट को नाम दिया गया है, this is known as McGurk effect. ठीक है, all right. तो ठीक है, fairly interesting. and the paragraph tells us कि ये जो McGurk effect है, इसको बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है इसके बाद में, and this has been used applied in a lot of different scenarios. और इसका रीजन के ऊपर में भी फोकस है इन द क्लोजिंग रिमार्क्स ओवर हियर, दैट दिस एक्सपेरिमेंट वेयर आप देख कुछ रहे हो, सुन कुछ रहे हो और परसेप्शन कुछ तीसरा ही आपका हो रहा है दिमाग में. तो दिस इज अ केस ऑफ मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन, जहाँ पे डिफरेंट सेंसेस, इन दिस केस योर ईयर्स एंड आईज, दे आर गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एंड योर ब्रेन इज डूइंग सम काइंड ऑफ खिचड़ी इन देयर एंड मिक्सिंग द टू थिंग्स इन एन अनप्रेडिक्टेबल फैशन. ठीक है, तो यूनिफाइड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट वेयर ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इज कमिंग इनटू योर माइंड. तो ज्यादा पढ़ने में भले टेक्निकल होगा, बट द टेक अवे इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट सुनाई कुछ दिया जा रहा है आपको, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लिसनिंग टू दैट थिंग, अगर आपको मैं कुछ दूसरा ही वीडियो दिखा दूं वेयर सम अदर थिंग इज बीइंग सेड, तो आपका दिमाग कुछ क्रॉस कनेक्शन कर देगा. एंड व्हाट यू विल एंड अप परसीविंग, व्हाट यू विल एंड अप थिंकिंग कि अरे मैंने क्या सुन लिया, विल बी समथिंग एल्स कंप्लीटली डिफरेंट, दिस थर्ड थिंग. ठीक है, तो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स दिस एप्रोप्रिएटली. ऑप्शन ए पे जाते हैं पहले. तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इज पुअर, तो विजुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर में हम ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा ऑप्शन ए का बोलता है. वेरी हॉरिबल. ये बात करी कहाँ पे गई है कि यार अच्छा ऑडियो क्लिप पुअर क्वालिटी है क्या, जाने दो, दिमाग बोल रहा है ऑडियो क्लिप मत सुनो, म्यूट कर दो दिमाग में, हम विजुअल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे क्या मैसेज दिया जा रहा है. हॉरिबल, नॉट एट ऑल मेंटेड, बाय बाय. बी, when the auditory speech signal does not match the visual speech movement, oh, so far so good. The acoustic speech signal is confusing and integration of the two is imperfect. यार ये ऑप्शन बहुत अच्छा है. ओके, टेक्निकली दिस इज ट्रू. अगर दूसरे ऑप्शन घटिया निकलते हैं तो देन वी विल गो एंड सिलेक्ट दिस. फिलहाल के लिए लेट अस से वी आर कीपिंग इट ऑन होल्ड. ठीक है, आई एम टेलिंग यू माय एक्चुअल माइंडसेट व्हिच हैपेंड व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, you may or may not agree with my approach, it is completely up to you. My job is just to put it out, maybe for your benefit. Option C, McGurk effect is a demonstration of multi-sensory integration. Okay, and it has been replicated many times. हाँ, तो
मेरे दिमाग का रिस्पॉन्स हाँ तो, क्योंकि ऑप्शन सी बस इतना सा बोल के छोड़ दे रहा है कि भाई ये कोई तो एक मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन वाला इफेक्ट है और हमने ये बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत बार करके देख लिया। भाई थोड़ा बताओ, इतना सारा ज्ञान दिया है हमको कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन आवर ब्रेन, दैट वी लिसन टू समथिंग बट वी आर सीइंग समथिंग एल्स एंड द एंड इफेक्ट इज समथिंग रैंडम थर्ड इफेक्ट हैपनिंग। एंड इसका रीजन क्या है, रीजन फॉर दिस ग्रेट इम्पैक्ट इज ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ बोला ही नहीं है उसने। इसका फोकस कुछ इसी पार्ट के ऊपर है कि अरे भाई ये इफेक्ट को ना बहुत बार हमने रेप्लिकेट किया है, वाह वाह बधाई हो, सॉरी सर आउट। इतना लेम इंफॉर्मेशन देकर नहीं चलता। फोकस किस चीज के ऊपर है वो तो अच्छे से प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए। इवन दो द स्टेटमेंट इन ऑप्शन सी इज ट्रू, गलत नहीं है, बट इट इज गिविंग अस रियली वेरी पुअर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरी वेरी सेकेंडरी और रादर इवन वेरी नॉन इम्पैक्टफुल टर्शरी लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें पैराग्राफ की। जो सबसे मेन इम्पैक्ट मेन फोकस वाला है वो तो मिला ही नहीं। Very thankfully, that has come our way in the form of option B. What does it say? Visual speech, मतलब जो इंसान ग ग ग बोल रहा था उसके साथ में ऑडियो क्लिप मिसमैच कर दिया है हमने, ऑडिटरी स्पीच वाला विच इज सेइंग ब ब ब। तो व्हाट इज इट इज रिजल्टिंग, इट इज रिजल्टिंग इन द परसेप्शन ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट मैसेज। करेक्ट, ड ड ड सुना आ रहा है वहां पे, या द द व्हाटएवर व्हाटएवर। एंड दिस डिस्क्रिपेंसी, दिस इल्यूजन इज नोन एज मैकगर्क इफेक्ट। बहुत बढ़िया, एक्सपेरिमेंट का भी नरेशन पूरा हो गया और जो एंड रिजल्ट है वो भी बता दिया और उसका नाम क्या है वो भी बता दिया। which when you compare with option B, तो option B unfortunately poor fellow is lacking in this labeling of this effect, इसको बोलते क्या है। तो on a comparative basis B and D, D wins the game. Option B is like New Zealand in India versus New Zealand match। ठीक है, I'm making this video in 2023, India New Zealand का semi-final match just कल ही हुआ on the day when I'm making this video। तो that is why New Zealand played very very well, बहुत awesome। बट वही है, समटाइम्स योर बेस्ट इज जस्ट नॉट गुड इनफ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इफ यू आर वाचिंग दिस आफ्टर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हो जाता है तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ है। आई होप दैट इंडिया विंस द फाइनल। लेट्स गो एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वंस अगेन अ समरी वन, वेरी डुएबल, वेरी इजी, ऑप्शंस आर वे टू सिंपल ओवर हियर। देखो, फॉरेन पीस कीपर से कौन होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको देता हूँ, आई डाइग्रेस एंड गिव यू सम एक्स्ट्रा ज्ञान। फॉरेन पीस कीपर्स इन द सेंस, अगर आपने मूवी देखी है जॉन अब्राहम की मद्रास कैफे, ठीक है, उसके अंदर क्या दिखा है दैट सम सिविल वॉर इज गोइंग ऑन इन श्रीलंका, ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। तो क्या होता है, बहुत सी बार जब सोसाइटी में सिविल वॉर होती है तो गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस एंड्स अप बिकमिंग कंप्लीटली इनइफेक्टिव, कि आधा देश एक तरफ हो गया, बचा हुआ आधा देश दूसरी तरफ हो चुका है। तो सरकार करेगी क्या, सरकार काम कैसे करती है, व्हेन एवरीबडी अग्रीज कि अच्छा डूड तुम हमारे रूलर। But if the country is, let us say, split into two parts, where one half agrees to some authority, some prime minister or whatever, and the other half is like, नहीं हमको तो सुनना ही नहीं है तुम्हारी। So in that case, the government ends up being completely ineffective. You can find a lot of these scenarios in African countries where a lot of civil wars keep on waging in some country or the other. Okay, तो ऐसे केस में क्या होता है, when the native government fails to put down conflicts, when it fails to put down violence, so foreign elements, foreign armies start to come in that country and act as peacekeeper, in the sense कि दूसरे बड़े पावरफुल देश की आर्मी ये झगड़े वाले देश में जाके आएगी और बोलेगी चलो अब हम सबकी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम लड़ो मत एक दूसरे। तो दिस हैपेंड इन द केस ऑफ मद्रास कैफे में, जैसा एग्जांपल दिया है। इंडिया इज एक्टिंग एज अ पीस कीपर देयर। ओके, इंडिया सेंट इट्स फोर्स व्हिच वाज नोन एज IPKF एंड वी वर एक्टिंग, इंडिया वाज एक्टिंग एज अ पीस कीपर इन श्रीलंका। ठीक है, तो व्हाट द पैराग्राफ सेज इज कि जनरली जो ये पीस कीपिंग वाली आर्मी आती है, ये लोग ना बबल में ही जीते हैं, खुद की दुनिया में मस्त मग्न है ये, इन द सेंस दैट दे लिव इन पॉश बंगलोज, फैंसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। देश की लगी पड़ी है जहां पर वो है, वहां पे सोसाइटी people are fighting so badly amongst each other, but this foreign protector guys, they are living a very chilled out life। तो ऑथर कहता है कि चलो एक बार करना, शायद जो इसके कारण है मैं शायद मान भी जाऊं कि यार चलो ठीक है, जो जो रीजन है वो पार्शियली जस्टिफाई भी किए जा सकते हैं कि दिस फॉरेनर गाइज दे आर लिविंग इन अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, दे नीड सम काइंड ऑफ कंफर्ट, दे आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर वगैरह। ठीक है, बट ऑथर देखो फिर से क्रिटिसिज्म वाली लाइन पे आ गया when he says but in the previous sentence he is like being a little bit lenient, a little bit क्या कहते हैं, tacit approval type situation, but immediately he is switching to criticism। He is saying नहीं,
इनकी ऐसी हरकतों की वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है वो इनसे नफरत करती है। लोकल पॉपुलेशन से दे तुम फॉरेन पीस कीपर निकलो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन में ऑथर इज गिविंग अस अ सोल्यूशन, बिकॉज देखो ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं है, देयर इज अ सोल्यूशन एंड व्हाट, कि इंस्टेड ऑफ दैट फॉरेन आर्मी, फॉरेन पीस कीपर वर्किंग ओनली विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसा मत करो, लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, meet them, spend time with them, understand what their problems are, and then try to solve their problem by earning their trust. वहाँ पे एक एक कहावत है जो मेरे डैड बार बार कहते हैं दिस सिचुएशन को, कि आप जब जो ये पीस कीपर्स कर रहे हैं ना, कि जब बंगले में रहकर ही दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फैंसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलकर ही दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके लिए एक हिंदी में बहुत बड़ी प्यारी कहावत है, ऊंट पे बैठ के बकरी हकालना। तो व्हाट द ऑथर इज रेकमेंडिंग इज, डूड, गेट डाउन फ्रॉम योर हाई कैमल एंड मिंगल अमंग द शीप, और ऑन ग्राउंड रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और फोकस आपका समरी के अंदर में रहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन और जो जो प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन है और उसके सोल्यूशन के ऊपर। प्लीज कीप इन माइंड दिस सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑथर हैज explained the problem to us and then ended the problem by explaining what should be done in order to improve the scenario. So if your option is not reflecting that uh, solution to the problem which the author has stated, so then you are going wrong कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इज वेरी हाफ बेक्ड इन दिस सिनेरियो। क्या कहता है कि जो माहौल है ये पुअर कंट्रीज में जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसकी वजह से फॉरेन पीस कीपिंग फोर्सेस दे लिव इन एनक्लेव्स। एनक्लेव का मीनिंग वही है, यू आर लिविंग इन अ क्लोज्ड कंपाउंड, maybe it is a luxurious place, but yes, essentially closed off. The general public can't come and visit these places very easily, ठीक है। जनरली जो हमारे यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह होती है, दे आर आल्सो प्रॉपरली हाउस्ड इन एन एनक्लेव वेयर एक्सेस इज फेयरली रेस्ट्रिक्टेड। एंड देन ऑप्शन ए सेइंग बट इट इज टाइम टू चेंज दिस सिनेरियो। ठीक है, ऑथर इज डेफिनेटली सेइंग कि यार बदलो इस बात को, बट कैसे, हाउ? ऑथर ने तो सोल्यूशन भी दिया है कि भाई जाओ लोगों के साथ बातचीत करो, उनसे घुलो मिलो, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो दैट इज कंप्लीटली मिसिंग इन ऑप्शन ए। तो feels like a very half baked type option. So I'll keep it on hold with a very very mild inclination to select it. मजबूरी में select करूंगा। फिलहाल तो my inclination is to reject it. But anyway, let's see what other options look like. Option B, extravagant lifestyles, aloof attitude among foreign peacekeepers, blah blah blah, in poor countries have justifiably made them the target of local anger. Once again the statement is true, but देखो solution जो है इस problem का, this is the problem, the author has also given us a solution. Where is the solution here? Completely absent. So भाई तुम निकलो, जल्दी जाओ। Option C, peacekeeping forces in foreign countries, okay, have tended to be aloof for valid reasons, ठीक है, so far so good, but चलो my hopes are going up, would be more effective if they work more closely with the local community. Oh wow wow wow, absolutely amazing option and hence it should win the answer, ठीक है। ऑप्शन ए के मुकाबले फार सुपीरियर ऑप्शन सी। आई विल वेरी कंफर्टेबली रिजेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन नाउ, no doubts anywhere. Option D is completely out of scope because it is saying पीस कीपिंग ड्यूटीज भाई कौन करना चाहिए, लोकल रेसिडेंट्स नहीं करना चाहिए। हेल नो, ये कहाँ बोला है पैराग्राफ, ठीक है। नोवेयर इज द ऑथर इंप्लाइंग कि भाई फॉरेन पीस कीपर्स तुम निकल जाओ, लोकल लोगों को ये काम करने दो। सो बाय बाय ऑप्शन डी, कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। चलो विद दिस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आंसर भी सही हो ही गया होगा आपका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पॉज द वीडियो हियर, सॉल्व दिस, and if you have not still not liked and subscribed to the channel, please hit those buttons and let's take a look at this question. Frankly speaking, मुझे options अच्छे नहीं लगे इसके अंदर में। Let's see what the paragraph is. Once again, very easy to understand, hardly anything complex. Something very relatable also, the kind of state which India is, right now in the year 2023. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो this is very relatable. Developing countries एक जमाने में चीप लेबर ही सप्लाई करती थी। यहाँ पर दिया है कि कंट्रीज लाइक दिस, दे इनका काम यही था कि भाई चीप लेबर सप्लाई करो पूरी दुनिया को। बट टुडे दीज कंट्रीज हैव नाउ कम फॉरवर्ड एंड दे आर नाउ बिकमिंग हॉटबेड्स ऑफ इनोवेशन। जिस तरह एक जमाने में जापान ने एकदम रैपिड फायर इनोवेशन करके उभर के आया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ऊपर, आज की तारीख में डेवलपिंग कंट्रीज आर डूइंग। So once upon a time known for cheap labor and all that, they are giving a solid competition to the world out there. They are creating, reinventing really good new systems of production and distribution. They are also experimenting with different business model. Good appreciation.
एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो रीजन इसका हमें दिया है दैट दीज कंट्रीज, दिस इकोनॉमीज, दे आर ड्रिवन बाय अ मिक्सचर ऑफ एम्बिशन एंड फियर. ठीक है, ऑल राइट. And another important point coming in that they are, being competitive. Let us say India या China जैसी country, they are not competitive in just their own backyard. मतलब खुद के home ground पे नहीं है सिर्फ ये लोग solid competition, but they are also going global themselves. Meaning कि if you pick up a country like India और China, ये सिर्फ खुद के home ground पे competition नहीं दे रहे global brands को. They themselves, India, China खुद दुनिया में जाके दूसरों को competition दे पा रहे हैं. So all in all, entire paragraph is very, very appreciative of developing countries. So you also need to reflect this tone in your answer option. Please keep in mind, कोई भी answer option criticism या drawback की कोई बात कर लेता है तो वो आंसर नहीं हो सकता, because nowhere any kind of shortcoming, any kind of drawback of these developing countries is talked about in the paragraph. ठीक है, let's analyze the option. What do they look like? Developing countries are being forced to invent new business model which challenge the old business model so they can remain competitive domestically. Hell no. कितना negative tone लिया है. First of all, option is very negative in nature. Secondly, it is saying कि मजबूरी में innovation किया जा रहा है या मजबूरी में new business models are being put forward. Wrong. बहुत गलत बात. रीजन क्या है वो क्लियर कट हमें बताया नहीं है, बट व्हाट वी कैन सी इज दैट द इंसेंटिव दैट ड्राइव is coming from within, which is a mixture of ambition and फोर्स्ड होना. मतलब भाई बहुत संकट की सिचुएशन आ गई है या फिर सम एक्सटर्नल पावर इज कंपेलिंग यू टू डू समथिंग, नहीं ऐसा भी नहीं है. एंड अनदर मेजर प्रॉब्लम ओवर हियर इज सो दैट दे कैन रिमेन कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिकली. ये कितना डाउन प्ले कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के अचीवमेंट को. पैराग्राफ ने तो ये बोला ही है कि होम ग्राउंड पे डोमेस्टिकली तो दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, दे आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल ऑन द ग्लोबल लेवल ऑल्सो. और ऑप्शन ए कहता है कि भाई घर में ही टिके रहने के लिए बेचारों को इतने हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं. वेरी बैड ऑप्शन आउट. बी, production and distribution models, they are going through rapid innovations worldwide. Okay, this seems a little bit problematic because we are seeing a redevelopment of production and distribution in specifically in developing countries. और ये कहता है worldwide. So minor red flag cropping up in my mind. फिर भी आगे पढ़ेंगे. As developed countries are being challenged by their earlier suppliers from developing world. No. This option is really not good. Distortion है इसके अंदर में. और secondly, suppliers in the sense problematic. What we know that poor countries or developing countries, they were known for cheap labor at one point of time, but nowhere is it given that so and so developing country वो supplier थे developed countries के किसी जमाने में, as option C says. Sorry, my bad, as option B says. ठीक है. So I have a problem with this suppliers word. This is not to my liking, and also this is a red flag of sorts worldwide. So once again, I'm not happy with this two options. So fairly confidently, I can move forward and reject this. Coming to option C now. Option C, competition has driven emerging economies who were once the suppliers of cheap labor. ठीक है, यहाँ तक so far so good. These developing emerging economies, they are becoming innovators of business models. क्या दिया है ये हमें यहाँ पर? Definitely दिया है. They are experimenting with entirely new business models. मतलब innovation तो हो रहा है business model में. Good. So far so good. And these innovations have enabled them to move up the value chain, good, and go global. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मेरे मन में सिर्फ एक रेड फ्लैग है कि यहाँ पर ऑप्शन सी सेज कि what is compelling emerging markets, emerging economies to do all this competition. बट हमें क्या दिया है? अंडरलाइंग रीजन क्या है ये प्रोग्रेस का या इनोवेशन का? तो दैट अंडरलाइंग रीजन इज एम्बिशन एंड फियर. तो वेदर this ambition and fear is equal to competition or not, kahin na kahin man mein I am still not very clear on this. But other than this single word, rest of the option is absolutely bang on. So what I'll do is I'll hold this and then see whether option D itself is better or not. If not, तो मजबूरी में ऑप्शन सी मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ. ऑप्शन डी देखते हैं. Innovations in production and distribution, they are helping emerging economies compete with countries to which they once supplied cheap labor. ये भी बहुत दिक्कत दे रहा है. क्यों? क्योंकि compete specifically with countries जिनको एक जमाने में cheap labor दे रहे हैं. Why is it narrowing the achievement zone of emerging economies? हमें क्या बोला है? Emerging economies, they are going global themselves.
मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर में अच्छी फाइट मार रहे थे। बट ऑप्शन डी क्या कहता है कि किसको फाइट मार रहे हैं? एक जमाने में जो कंट्री को चीप लेबर देते थे, मतलब यूएसए एंड इंडिया में भी, सॉरी सॉरी, चाइना एंड इंडिया मे बी वंस अपॉन अ टाइम सप्लाइड चीप लेबर टू लेट अस से यूरोप एंड अमेरिका। तो ऑप्शन डी सेज कि भाई उन लोगों को कंपटीशन दे रहे हैं ये इंडिया चाइना। बट इज दैट गिवन इन द पैराग्राफ? नो, दे आर सेइंग कि पूरे पूरे ही ग्लोबल लेवल पे अच्छी फाइट मारी जा रही है। तो ऑप्शन डी इज नैरोइंग द स्कोप which is not to my liking. So I will of course compare its soundness, compare its value with option C. तो दोनों जगह मुझे रेड फ्लैग मिल चुका है। आई एम नॉट हैप्पी विद बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। तो नाउ द एंटायर कॉल जो मुझे लेना है, जो एंटायर डिसीजन लेना है, नाउ बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग कि हाउ कॉन्फिडेंट एम आई विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स। अगर इमेजिन कर लो ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आ जाए, तो मेरे बचे हुए आरसी पैसेज में अटेम्प्ट कैसे? एम आई वेरी कॉन्फिडेंट देयर? हैव आई अटेम्प्टेड अ फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी? एम आई फीलिंग रियली गुड, पॉजिटिव? तो फिर मे बी आई विल गो अहेड एंड टेक द रिस्क बाय मार्किंग ऑप्शन सी एज वेल। बट अगर मैं ऑलरेडी काफी चिंता वाले जोन में हूँ और मुझे नहीं ठीक लग रहा है, नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट विद माय अटेम्प्ट्स, तो आई विल ट्राई टू स्टे सेफ एंड अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव डन रियली वेल इन द रिमेनिंग टू क्वेश्चन। तो फिर इतना लालच नहीं होना चाहिए कि भाई तीनों समरीज हिट करने का डेस्परेशन है ही। ओके, सो दैट इज व्हाई always be keenly aware. Do not decide to go for a question on a standalone basis. Always mental comparison चलते रहना चाहिए, खास करके VA, because by the time maximum folks come to VA, आरसी पैसेजेस करके थोड़ा सा दिमाग बोलो, जजमेंट बोलो, थोड़ा सा वेयर आउट हो ही जाता है। ठीक है, तो एनीवे ऑफिशियल आंसर हैज बीन गिवन एज सी। आई एम स्टिल नॉट 100% कन्विंस्ड अबाउट इट, बट हाँ, माय जॉब इज टू गिव यू my approach, my thought process, which I believe I've done fairly good enough. ठीक है, फिर भी if you have any doubts, let me know in the comment section. और अब जाते हैं पैराजम्बल्स की तरफ। ओके, so pause the video here, attempt it, very straightforward. Here is the explanation. बहुत ही इजी सा है। व्हेन यू रीड सेंटेंस वन, तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि दूर दूर तक की ये तो बात शुरू करेगा, पहले दो पोजीशन पे तो रह ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल स्पीसीज और सच अ कॉम्प्रिहेंसिव रीजनरेशन। मतलब ऐसा रीजनरेशन, भाई कैसा, वो तो बता दो पहले। तो सेंटेंस वन डेफिनेटली गोज ऑन पोजीशन 3 और 4। so moving ahead, we have very good connector present over here in 3। दे मतलब वो लोग, कौन? तो बायोलॉजिस्ट। तो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर दैट 2 के बाद में 3 आ जाना चाहिए, बिकॉज 4 इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंटायरली। However, their ability, तो अभी ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये their मतलब बायोलॉजिस्ट नहीं समझना। This their ability to regenerate, मतलब we are talking about this fish over here. This fish is showing some kind of regeneration. Which fish? Zebra fish. ठीक है, दिस फिश इज शोइंग सम काइंड ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी। उसका स्टडी कर रहे हैं कुछ बायोलॉजिस्ट लोगों ने। सो द सीक्वेंस बिकम्स वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज 2 3 4 एंड देन यू शुड बी टॉकिंग अबाउट वन, बिकॉज इट इज सेइंग अदर एनिमल स्पीसीज। तो भाई पहले जो आपके हाथ में है उसके बारे में तो पूरी बात कर लो, विच इज गिवन इन 2 3 4, एंड देन यू गो एंड पुट वन एट द एंड। तो द सीक्वेंस लुक्स समथिंग लाइक दिस, very straightforward, very sure that 90-95% of you guys must have gotten it correct। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं आना चाहिए। although parajumbles itself is a very subjective question category, but फिर भी fairly doable। ये वाला तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, once again I'll talk to you about this question from the viewpoint of exam कि I generally try to solve parajumbles at the very end, because आखिरी के 4-5 मिनट में रश होता है, judgment also is slightly impaired, mentally also you are tired, and given the subjectivity of this question category, so in order to reap the full benefit of the theta format, no negative marking, and also the subjectivity से भी बच के रहना है, so that is why I try to solve parajumbles at the end। और अब मेरे सामने 3 ऑप्शंस है, ऑप्शंस इन द सेंस 3 पैराजम्बल क्वेश्चंस है। आई लुक एट दिस क्वेश्चन एंड लाइक बाप रे, इतना बड़ा सेंटेंस। तो I'll try to do a hit job, very quick and dirty hit job। what I'll try to hunt for a pair। मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो either I'll completely drop it or enter in some answers really blind। okay, so thankfully what I have is I have a really good pair coming in sentence 3 and 4।
3 कहता है दिस पोलैरिटी, कैसी, कौन सी पोलैरिटी? थैंकफुली पोल्स पोलैरिटी का मेंशन है सेंटेंस 4 में, एंड polarity poles is nowhere mentioned in sentence 1 and sentence 2, not at all. So this makes my job very easy, even though I'm not able to understand entirely what is going on in the 4 sentence story क्या बोली जा रही है, even though I am not 100% clear there, I am clear that 4 and 3 should be together. ठीक है, एंड थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर सेंटेंसेस को, और अगर मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ूं तो इट बिकम वेरी क्लियर दैट 4 इज अ वेरी गुड स्टार्ट. ठीक है, इट्स गिविंग द स्टार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि कोई भी आप जब एक लिटरेचर का पीस उठाते हो, एक किताब उठाते हो, तो 2 रोल्स है उसके अंदर, 2 हाफ से उस स्टोरी के. ठीक है, आर्टिस्टिक और एक एस्थेटिक. एंड आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आर्टिस्टिक क्या होता है, एस्थेटिक क्या होता है, दोनों जब साथ में आते हैं व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड ऑल. तो वन वन थिंग बिकम्स वेरी क्लियर, सीक्वेंस एक तो 4-3-1-2 बनेगा या फिर 4-3-2-1. Now also plugging this fact with my interpretation कि मुझे नैरेटिव के ऊपर 100% ग्रिप नहीं आई. जितने क्लैरिटी से पिछला पैराजम्बल में आई कुड हैव नैरेटेड द स्टोरी वेरी इजीली कि भाई पहले 3 सेंटेंस में ज़ेब्रा फिश की बात हो रही है, अगले सेंटेंस के अंदर में हम दूसरे स्पीसीज का बात कर लेंगे, केस क्लोज. यहाँ पर आई कैन नॉट बी सो कॉन्फिडेंट. सो in order to avoid wasting my time here and also knowing that there is an inherent subjectivity to parajumbles, I'll take my blind shot with either of these. ठीक है, अब आपका अप्रोच अलग रह सकता है, डेफिनेटली इट्स अप टू यू. नाउ 4-3-1-2 जिसने बनाया, दे विल फाइट टूथ एंड नेल टू जस्टिफाई दिस. जो 4-3-2-1 बनाएगा, दे विल फाइट टूथ एंड नेल टू जस्टिफाई दिस. माय जॉब इज नॉट टू डू दैट. आई एम नॉट गोइंग टू शव any explanation forcibly down your throat. My job is to be fairly honest with you guys, and this is the official answer. 4-3-1-2. Okay, so chalo, with that in mind, let's go try to look at the next and last paragraph question. बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी वंस अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक्स पे तो कुछ भी आ जाए यार, 4 क्या 6-7 सेंटेंस का भी अगर आ जाता है हमारे सामने पैराजम्बल, तो यू शुड बी एबल टू मेक इट बिकॉज वी आर सो फेमिलियर विद इट. ओके, तो वेरी सिंपल, द सीक्वेंस हियर हैज टू बी, 2 के बाद में हम 4 रखेंगे. नो नो नो, माय बैड, रियली बैड, प्लीज पार्डन. 2 के बाद में हमें आना चाहिए 1, क्योंकि 2 में प्रॉब्लम बताई जा रही है कि अरे यार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इज गोइंग टू गो बियॉन्ड 2 डिग्री. तो 2 डिग्री से आगे कितना जाएगा, 2.5, 3, 4, 5, ये हम नहीं जानते. तो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या दिया जा रहा है? तो पॉपुलर सोल्यूशन गिवन इज स्ट्रांगली परसुएड. एक्सॉर्टेशन का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग परसुएशन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग परसुएशन किया जा रहा है, भाई पेड़ लगाओ. क्यों लगाओ? तो क्यों लगाओ, तो ये यहाँ दिया है, बिकॉज क्योंकि ट्रीज कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड देम, दे एब्जॉर्ब कार्बन, लॉक इन कर देते हैं कार्बन को, और जब आप उनको जलाते हो ट्रीज को, तो फिर वो कार्बन रिलीज हो जाता है पूरा. दैट इज वाई अमेजोन बेसिन में जब फॉरेस्ट फायर्स हुए तो बहुत हेडलाइंस वाली बात हुई. गुड, फेयर इनफ. तो द सीक्वेंस बिकम्स 2-1-4-3. ठीक है, तो barely any headache, ये तो किसी को भी जम गया होगा. So this wraps up our discussion over here. 3 summary questions, 3 parajumble questions, and very luckily as you can see, ये सारे 6 questions CAT'21 slot 1 में आए थे. So in a way actually I'm fairly envious of whoever must have gotten this slot and who found decent amount of time to solve BA, जो justice कर पाया उसे. तो out of this 6 question, 2 odd one out को तो मैं फिलहाल भूल गया हूँ. I am not counting them. Out of these 6 questions, 4 were really very doable. ठीक है, एक समरी और एक पैराजम्बल को मैं डिस्काउंट कर भी दूं तो भी 4 questions so easy, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप मार्क कर सकते हो. तो 4 3 12 मार्क्स, रियली नॉट अ स्मॉल नंबर. ओके, एंड इफ यू टेक इनटू अकाउंट वो दूसरा वाला पैराजम्बल जिसमें 4-3-1-2 और 4-3-2-1 का थोड़ा सा फाइट था, if you are able to luckily arrive at the officially right sequence, so then your tally from VA itself jumps to 15 marks. Amazing man, amazing. ठीक है, so कहीं ना कहीं that is why keeping in mind, I recommend strongly that as long as the CAT format stays of 2 hours 40 minutes to VRC section, तो कोशिश कीजिए आप मिनिमम 12 मिनट्स तो भी आप दे सको अच्छे से VA section. And this advice is not for people who are amazingly fast or super solid with VRC. This is for your regular average Joe aspirant, जो 2 RCs और उसके बाद में
मतलब 2 RC बोलो या your choice you want to go for 3 4 whatever, everybody's strategy is different, but my approach is कि ठीक है आप RC को एक justified time दो, but also try to give or try to do justice to VA also. Some people give only the last few remaining 5 minutes and then have a very haphazard approach with respect to what to do in the section. I'm not quite in line with that thought process. I would like to recommend कि आप minimum 10 से 12 मिनट तो भी दो, so that आपके स्लॉट में अगर इस प्रकार का VA सेक्शन आ गया तो यू कैन मेक अमेजिंग अमाउंट ऑफ मार्क्स इन देयर. 15 मार्क्स इजीली अगर VA से बन गए, तो आपने अगर RC पैसेजेस में से 18 22 मार्क्स भी निकाल लिए, तो इमेजिन वेयर योर टोटल टैली विल स्टार्ट. ठीक है, चलो देन, विद दैट इन माइंड, let's wrap up this video. I hope that you liked it. Please hit that like and share and subscribe buttons, and I'll see you in the next one. Tada, bye bye, and take care.